Hello guys, welcome to study more. So where we are going to study lot, right? So okay, let's start with our pharmacokinetics. In pharmacokinetics, last video I have told you that means मैंने सब कुछ बता दिया था कि pharmacokinetics क्या होता है और उसको किस तरीके से पढ़ना है, उसकी ब्लूप्रिंट मैंने आपको दी थी, राइट? सो सबसे पहले अपने को पढ़ना है कि pharmacokinetics में मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, राइट? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की नॉलेज रहनी चाहिए। सो लेट स्टार्ट। हम पहले बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, उसके बाद हम पैसिव डिफ्यूजन और ये सब क्या होता है, ये स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट, कैरियर ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सारी चीज़ हम पढ़ लेते हैं, राइट? सो लेट स्टार्ट विथ आवर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पर थोड़े से नोट्स बनाए हैं, वो देख लेते हैं अभी। Biological membrane, this see pharmacokinetics, so it is a drug movement, right, across the biological membrane, right? The drug movement across biological membrane, and this biological membrane is about how much? 100 angstrom, right? This is of 100 angstrom. The thickness of the membrane is 100 angstrom. Okay guys, so this is made up of how much? This is made up of phospholipids and protein. This is made up of phospholipids and protein. This phospholipids is made up of glycerol backbone and fatty acid tail. Okay guys, this is made up of, see here, this is phospholipid bilayer. Can you appreciate? दिख रहा है आपको? ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इस तरीके का पूरा लेयर कंटिन्यू रहता है, ठीक है? ये है ग्लिसरॉल बैकबोन, दिस इज ग्लिसरॉल बैकबोन, ओके, जो कि वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक। उसके बाद अंदर के साइड में होता है फैटी एसिड टेल। ये फैटी एसिड टेल जो होते हैं वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, जिसका मतलब ये टेल है वो है हाइड्रोफोबिक, राइट? दिस टेल्स आर हाइड्रोफोबिक, ओके। water insoluble, and glycerol, this is water soluble, means water soluble backbone means hydrophilic, okay, hydrophilic. This philic means love, means hydrophilic, love means water loving, hydro means water, hydro means water, right? Phobic means it's a phobia or hate, right? This hydro means water, so water hating and water loving, okay guys? So this is what it means. So इसके अक्रॉस, दिस इज, ये सेल मेम्ब्रेन है, हर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसा सेल मेम्ब्रेन था। इसके अक्रॉस यहाँ से अंदर या बाहर, अंदर से बाहर जाने के लिए जो भी मॉलिक्यूल जाता है वो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, राइट? दैट सब्सटेंस आर का, एक तो लिपिड सोल्यूबल होता है, दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल, राइट? सो दो तरह के लिक्विड होते हैं, एक लिपिड सोल्यूबल लिक्विड होता है और वाटर सोल्यूबल लिक्विड होता है। सो वो हम जानेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉस्फोलिपिड ए लिखा है हमने, राइट? इसके बारे में हमने जान लिया। अब बी, प्रोटीन्स, राइट? सो प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं, एक इंटीग्रल और दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन, ओके गाइज? सो दिस इंटीग्रल प्रोटीन, आई होप यू आर एबल टू अप्रिशिएट दिस, दिस इज इंटीग्रल, राइट? इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। सो ये थ्रू आउट दिस चैनल रहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन लाइक दिस, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। दैट मीन्स फ्रॉम ट्रांसम्यूरल प्रोटीन भी हम इसको बोल सकते हैं, ओके गाइज? और दूसरा होता है पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन मीन्स दिस कैन बी ओनली ऑन द सरफेस, हियर, लाइक हियर और हियर, दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन, ओके? समझ रहा है आपको सबको कि फास्ट हो रहा है? ट्रांसम्यूरल प्रोटीन मीन्स इंटीग्रल प्रोटीन जो थ्रू आउट द सेल वॉल होगा, और पेरिफेरल प्रोटीन मीन्स ओनली सरफेस के ऊपर होगा, ओके गाइस? सो सी, इंटीग्रल प्रोटीन ये थ्रू आउट द सेल वॉल रहेगा और वो एम्बेडेड रहेगा, राइट? एम्बेडेड मीन्स फंसा हुआ रहेगा उसके अंदर। सो अगर ये ऐसा है
सो यहाँ पर एक ऐसा कोई तो प्रोटीन रहेगा, राइट, फिर बाद में वापस ऐसा। सो ये मेम्ब्रेन ऐसी कंटिन्यू तुम्हारी चलती रहेगी और बीच में ही, और यहाँ पर कभी तो कलर दूसरा कर दो क्या, ये है तुम्हारा ट्रांस म्यूरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन, राइट, और ये है तुम्हारा पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, सो दिस कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। ये पहले तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के साथ ये मर्ज रहता है, इसके अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होते हैं, दैट्स वाई ये यहाँ पर चिपका रहता है, यहाँ पर स्टे रहता है। ओके, इनके अंदर इंटरेक्शन कौन सा रहता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। बाय हाउ दे आर देयर, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ओके गाइस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है उनमें। और ये इसकी टाइप ये कौन कौन से होते हैं, एक तो आयन चैनल प्रोटीन, आयन चैनल होते हैं जो इंटीग्रल प्रोटीन थे, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होते हैं वो भी इंटीग्रल प्रोटीन के कैटेगरी में आते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी एक प्रोटीन होता है, दैट दे आल्सो कम्स इनटू दिस कैटेगरी। जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, जिसको हम जी प्रोटीन भी कह सकते हैं, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। सो कौन कौन से आते हैं, फिर से रिपीट करो, आयन चैनल, transport protein, receptor protein. So receptor is a kind of protein, receptor, then GTP binding protein also called as a G protein. So 1 2 3 4 चार तरह की प्रोटीन, राइट, यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब सब इस मेम्ब्रेन के थ्रू आउट कौन पास होता है, कौन पास हो सकता है, जो पास कौन सा होगा, पास वही होगा जो लिपिड सोल्यूबल है। ये लिपिड टेल है ना, फैटी एसिड टेल, इसके अंदर जो सोल्यूबल होगा, दिस फैटी एसिड टेल के अंदर सोल्यूबल होगा, वही दैट ओनली कैन पास थ्रू आउट दैट सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस कैन पास थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, राइट, थ्रू आउट द मेम्ब्रेन। सो वही सब्सटेंस इसके पास होगा। अब ये है हाइड्रोफोबिक, सो इसके अंदर भी हाइड्रोफोबिक वाला ही सब्सटेंस डिज़ोल्व हो सकता है, राइट। सो वो कौन कौन सा होता है, सो फैट सोल्यूबल होगा, हाइड्रोफोबिक मीन्स व्हाट, फैट सोल्यूबल, राइट। सो फैट सोल्यूबल सब्सटेंस, सो व्हाट आर द ऑल फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस, राइट, एक्सेप्ट आयन मीन्स जिसके ऊपर चार्ज पार्टिकल होता है, जो ऑल आर द, वो जो भी आयनिक कंपाउंड है, सारे आयनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोफिलिक। ओके गाइस, सारे आयनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोफिलिक, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोफिलिक। why, because they have charge, plus or minus charge on it, on them। okay, so who all call this, oxygen, carbon dioxide, steroid hormones, right, all these are what, these are nothing but steroid hormone, these are nothing but lipid soluble, these are lipid soluble, so these can pass, right, these are dissolved, so hydrophobic lipid bilayer, okay, so this can pass through the cell membrane, okay, so they can pass through the cell membrane। और वाटर सोल्यूबल क्या होता है, वो पास नहीं करेंगे, दे कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सो वो कौन कौन से होते हैं, सोडियम, क्लोराइड, ग्लूकोज, वाटर, राइट। सो ऑल दीज कैन नॉट पास थ्रू द, cannot dissolve, sorry, cannot pass through that cell membrane or cannot dissolve into lipid, so lipid layer, okay, so lipid bilayer। so what they do, so how do they get then absorb, right, आपको सबको पता है ग्लूकोज हम खाते हैं, ग्लूकोज तो एब्जॉर्ब होता है, so ये सब कैसे होता है, right, so how do they, what they do, so they take help, they take help, whose help, ये किसकी किसकी हेल्प लेते हैं, पहले तो वाटर फिल चैनल की हेल्प लेते हैं, राइट,
they take help from the water field channel. So with the help of this they can pass through that. So they find out the loopholes like pores. There are some pores through which they can pass, through which they can pass, right? There are pores. Then they have the carrier transport. So they have there are a protein transport protein, right? For example, there is a transport protein for glucose, right? So they take help of these three things. First first is water fill channel, second is pores, and third is carrier transport. Okay guys, so all these three things they use. So going further, I hope you all have got all this thing. So going further, सी गाइज, इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में मैंने तुमको बता दिया। पेरिफेरल प्रोटीन्स के बारे में, ये पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं ये एम्बेडेड नहीं होते, राइट? दे आर नॉट एम्बेडेड इनटू द सेल मेम्ब्रेन, दे आर नॉट एम्बेडेड, दे not covalently bound to the, means they are not bounded to the cell membrane also, they are not bounded to the cell membrane, they are just loosely attached to the membrane. How they attach? By electrostatic interaction. Okay guys, how they attached with cell membrane? By electrostatic interaction. लिख के बताता हूँ. Okay. Okay, so now we have studied this. Okay, we have come studied this. One more thing I want to tell you about this is that this attach, or this is in communication with cell membrane by hydrophobic interaction is there. Hydrophobic. Okay, and here how they interact, or how they attach with the cell membrane. They are not covalently, non-covalent, they are not attached covalently. Okay, they are not attached covalently. Okay guys, and they are not embedded in the cell membrane, they are not embedded. And third one, how they are attached with cell membrane? So by the means of electrostatic interaction. Okay guys, so this is how they are attached with cell membrane. Okay, I hope you got this. So moving further, there are also one more things, but I will just mention that things to you. Okay guys, so there are third one which cell membrane has, that intercellular connection. Right, what are they? One is gap junction, okay, and second one is tight junction. We all have studied this in histology, right? Okay, so gap junction and tight junction. Okay, so moving further, this gap junction present where? This gap junction present on, anyway, this gap junction present in the heart cell. Okay, means myocardium. What it allows? It allows the current flow and electrical coupling between the cells. Okay, and this tight junction is nothing but attachment between two cells. Okay, between two cells. So what it does, so ये ऊपर कैसे जाएगा?
Anyway, sometimes these tight junctions are permeable to something, and impermeable to some else. For example, renal tubule. In renal distal tubule, it is impermeable, permeable. Okay, and in the gallbladder, proximal tubule, in proximal tubule and in bladder, they are permeable. Okay, just remembering this, we don't want this thing right here now, but anyway. Okay guys, so now we'll see the diffusion. Okay, in diffusions, you know that this don't require ATP. No ATP is required. No ATP is required. Okay, it depends on concentration of substance. Okay, concentration of substance, and majority of drugs follow this path. Follow this path. Okay, this path. So this is so to explain you that suppose this is an suppose this is an biological membrane. Okay, so or suppose this is a membrane, and here it is a drug. Sorry, this is a beaker, suppose. Okay, so here you are pouring a drug. This is drug. Okay, so concentration of drug say 10. Okay, and here no concentration, no or zero drug is present. So this will follow this pathway. Okay, so this drug will go from A side to B side. This is B side, right? Why? Because concentration on A side is concentration of drug on A side is more, right? And concentration on B side, ड्रग का concentration B साइड में कितना है, लो. सो एक रूल है इसमें कि डाउन हिल जाएगा. ये डाउन हिल जाएगा मतलब ऊपर से नीचे, राइट. ऊपर से नीचे, downhill like this. Okay, so from higher concentration to lower concentration like this. So it get diffused here. Okay guys, this is passive diffusion. This is called passive diffusion because okay, as there is because there is no role of cell membrane, or biomembrane. Okay, so importantly, if we know that cell membrane is what, only lipid soluble drug will go pass, right? So higher the lipid solubility, okay, higher the lipid solubility, higher is the diffusion, means more is the diffusion. Okay, so more is the diffusion means drug will get quickly absorbed. So till now you have understood, right? So let me draw one good diagram for you. Okay, this is the partition. My diagram is not that good, so sorry for that. This is the partition. Okay,
Okay, let once again. Okay guys, so I hope you all understand, you are getting this. Here we have substances, right? Here we have substances, lot of substances we have. Okay, so can we close this? Okay, so here this red one is the substance, and blue one. Okay, we have this blue one, this substance, triangular substance. Okay, all these substance are okay. So now we have to understand what is, next second. Mhm. Draw this line. Okay, okay. They support there, nothing is there. Okay, so this is higher concentration time, higher concentration, higher concentration, higher concentration is there. Okay, here lower concentration, lower concentration. Okay, so this red one has only some, okay, some particle, and this also has 1 to 2. Okay, so here the passive diffusion takes place from here. This is passive diffusion, passive diffusion. Okay, passive diffusion of this one, this red ones. Okay, as this red ones is more, this is more lipid soluble, more lipid soluble. Okay, soluble, more lipid soluble. Second one, this is higher in concentration, higher in concentration. Okay, so as we know that our membrane is only membrane will allow only lipid soluble substances to to pass through. Okay, so only lipid soluble and higher concentration. So this from higher concentration to lower concentration movement is there. Okay, so kinetics. Okay, here they have only a pore. Okay, this is pore. Okay, or paracellular space, what you call paracellular space, cellular space. So these pores, understood what I told, that they find out the loopholes, the same thing, this is pores, right? So from here, this triangular substance, this substance are water soluble, water soluble. Okay,
So these substance will go from diffuse from no go from right this higher concentration to lower concentration area. Okay, so this substance will come here. Okay, understood. So this thing is what? This thing is nothing but, this is not diffusion, this is filtration. This is filtration, this get filter from there. Okay, and this thing is what? Passive diffusion. This thing is what? Passive diffusion. Okay guys. Okay, now guys, as we have look for this. Okay, as we have seen, there is a filtration, right? This filtration, right? Filtration. So we will see the filtration. What is filtration right now? Okay, so filtration is nothing but passage of a drug. Filtration. Filtration. Filtration is what? Filtration is passage of drug through that pores, right? So that pores is called as aqueous pores. Through that aqueous pores, or also called as paracellular space. Okay, space means that can be the aqueous pores or that can be the paracellular space, where in the membrane. Okay guys, so make sure that I hope you have understood this thing also. Let me tell you that this pore is of this size. Pore is of this size, or this space is of this size. Okay, so this is the size of, okay, so this is size. So tell me that can this size of substance be can pass through this? No, right? Okay, so to get pass, so the substance should be like this, right? So here one catch is there, right? What catch is there? Only lipid soluble substance, okay, which is small in size than the pores, can pass through this. Okay, so these hydrophilic substances, okay, hydrophilic substances use this mechanism, right, or use this kind of pores to pass through that membrane. Okay, so you can conclude one thing from this, that hydrophilic substances are what? Small in size, that they should be small in size, smaller in size, right? This is one criteria has to be satisfied by the substance. Okay, now what is the exact word for this? So now, for now onwards, we will use molecular weight, or sorry, molecular size. Okay, molecular size. So how much it should be? It should be less than 100 or 200. Okay, which means more than 100 or 200 molecular size substance, more than 200 substance cannot penetrate these pores. Okay, so the cell size should be very small. Okay, so like example is what? Example is this RBCs. The RBC size is mucosa
इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में आरबीसीज की साइज इतनी होती है, राइट. सो दे हैव वेरी स्मॉल पोर्स, ओके, विच इज़ 4 आर्मस्ट्रॉन्ग. ओके, so drugs with molecular, okay, however they can. Okay guys, so this is what this is for today. So I think we'll stop here. What we have studied, we have studied diffusion, we have studied filtration, we have studied whole mechanism of diffusion also. Okay, so we'll see, we'll go further in next video, next lecture. Okay guys, so till then subscribe to study more. बहुत मेहनत लग रही है गाइस ये सब बनाने में. ओके, सो डू सब्सक्राइब. सब्सक्राइब टू स्टडी मोर. ओके, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको उनको थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया वो जल्द से जल्द कर दे और डू स्टडी. ओके गाइस, थैंक यू, गुड डे, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर.